विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट पे अपने आंसर्स को मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है और यही से ही आंसर इस क्वेश्चन के लिए कि भाई कॉपर जो है इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। क्यों? बिकॉज कॉपर जो है वो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है। कॉपर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है। सो मैं अब कहना चाहूँगी a more reactive element can displace a less reactive element from its salt solution. The metals above hydrogen in the activity series, they can react with dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid in order to liberate hydrogen. लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद आता है in the activity series. Copper fall below hydrogen in the series, hence it cannot liberate hydrogen from the acids. ठीक है, आप यकीन मानिएगा इफ आई जस्ट गो विद द फैक्ट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ जी, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज, तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाए। हाँ जी, सो रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ पर देखिए, it's potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead. It's now hydrogen over here, and hydrogen के बाद आता बेटा copper, then mercury, then Ag, then Au, and then platinum. So what you are seeing over here कि copper is lying just below the hydrogen over here. Isn't it? हाँ जी. So it cannot liberate hydrogen from the acids. Statement 1 is not correct, but the right answer to the question. Now, if I just talk about other important thing, and that is manganese in its higher oxidation state forms stable compound with oxygen and fluorine. ये बिल्कुल apt है. Manganese को देखोगे Mn2O7, manganese Mn2O7 के बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस इज द ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज बेसिकली. फाइन. सो इसके अंदर जो मैंगनीज है इट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7 विच इज फाउंड इन Mn2O7. ऑक्सीजन जो है ना इट इज बेटर able to stabilize. Oxygen is better able to stabilize the higher oxidation state than fluorine. And it can form multiple bonds with the metal. So in Mn2O7, each manganese is surrounded by, tell me, oxygen in a tetrahedral manner. Is the thing clear to you people? Okay. Talking about the fluorides, if I just go with the fluorides, so याद रखना मैं बात कर रही हूँ MnF4 के बारे में. सो मैंगनीज यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. इट कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. नाउ Mn+3, manganese in +3 oxidation state and cobalt in +3 oxidation state are oxidizing agent in aqueous solution. They are oxidizing agent in aqueous solution. So yes, manganese in +3 oxidation state and cobalt in +3 oxidation state, they are oxidizing agent in aqueous solution. Now manganese and cobalt, they are strong oxidizing agent. Manganese and cobalt, they are strong oxidizing agent in aqueous solution. Why? Because they can, oxidizing agent का मतलब क्या होता है जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दें लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए. Itself gets reduced. Itself gets reduced. Reduce कैसे होंगे? By gaining electrons. By gaining electrons. ठीक है? Yes or no? So they are able to act strong oxidizing agent because their least oxidation state is +2. Their least oxidation state. ठीक है? Manganese and cobalt, their least oxidation state is +2. That's why. Now saying about one particular thing, and that is Ti2 positive and Cr+2, they are reducing agent
in aqueous solution? Well, if I'm talking about reducing agent, that means they itself get reduced. Itself gets reduced. Itself gets reduced. No, itself gets oxidized. Rather, I should say over here, itself gets oxidized. I'm sorry. Itself gets oxidized. Reducing agent क्या होते हैं? जो दूसरों को तो reduce करते हैं लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं. Itself gets oxidized. Itself gets oxidized. Oxidation का मतलब है loss of electron basically. So Cr2 positive is a strong reducing agent because it easily loses electrons to form Cr plus 3, which has stable electronic configuration, which has a stable configuration. Yes, absolutely right. So Cr in plus 3 oxidation state, इसका valence electronic configuration क्या है? 3d3 है. Cr in plus 2, its valence electronic configuration is 3d4 basically. So the standard electrode potential for Cr3 positive to Cr2 positive couple is minus 0.41, which indicates that Cr plus 2 has a high tendency to donate electrons. ठीक है? Cr plus 2 has high tendency to donate electrons, Fine. So, if I just go with that particular manner for Ti3 positive, Ti plus 2 जो है, if I just talk about for Ti2 plus, so over here it's 3d2. Over here it is 3d2 basically. Now, if I just say itself gets oxidized, so titanium in plus 4 oxidation state will be giving us 3d0. D orbital is complete. D orbital is khali, totally empty, and that is actually giving us the stability over here. So yeah, that's absolutely right. Second, third and fourth are the correct statement. Option 1 is not the correct statement.